हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कमल है और आई एम द फाउंडर ऑफ VLSI टेक, दैट इज़ माय चैनल। एंड आज मैं ये वीडियो दे रहा हूँ टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल डिज़ाइन। एंड अभी जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने ऑलरेडी 7-8 वीडियो डाल चुका हूँ और अभी आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस डालूंगा रिलेटेड टू डिजिटल एनालॉग डिज़ाइन। सो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि इस फील्ड में बहुत स्कोप है। एंड फिजिकल डिज़ाइन हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। सो आप जितना रिक्वायरमेंट फिजिकल डिज़ाइन में है वो कहीं नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट अगर थ्राइस है तो पीपल वर्किंग इन दिस फील्ड ओनली वन टाइप्स ऑफ दैट। सो आप लोग देख सकते हो कि इस फील्ड में बहुत सारा स्कोप है। और मेरे टीम में जो है राहुल है, जयदीप है और श्रद्धा है पीछे बैठी हुई है, तो इधर पारितोष है। तो ये लोग भी ऑलरेडी फिजिकल डिज़ाइन में ऑलरेडी काम करके अच्छे कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं। सो जैसे कि मैं अभी आपको इंट्रो कराता हूँ राहुल जयदीप से। जयदीप, सो जयदीप सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप बताइए। तो कैसा लग रहा है, मतलब टफ है कि ईजी है? सर टफ तो बहुत है इसमें काम करने में, क्योंकि इसमें एक्चुअली जैसे आप बोले थे ज़्यादा लोग नहीं हैं तो हेल्प भी मिलना थोड़ा दिक्कत होता है। बट अगर आप काम देखें तो द वर्क इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं जैसे मैं लेआउट बना रहा था, तो इन सब में फिजिकल डिज़ाइन एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन एसएमडी प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या है कि कौन सी ऑसिलेटर बनाना है, वो भी 10 किलो का। तो उसमें मैं डिज़ाइन कर रहा था, जैसे रिंग ऑसिलेटर डिज़ाइन करके तो मैं इसको स्क्वायर वेव लाना चाहता हूँ। So what difficulties you got? डिफ़िकल्टी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे SLPD के यूज़ कर रहे हैं जिसमें, तो उसमें PD को इंटीग्रेट करना। फिर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे केडेंस यूज़ कर रहे हैं, मेंटल ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं, फिर सिनॉप्सिस में आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे कैलिब्रे को हम लोग ने इंटीग्रेट करके रखा है, तो उसमें और फिर हम लोग जब DRC करते हैं तो DRC में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो वो सब एक एक को सॉर्ट आउट करना, जैसे तो हेल्प उसमें करना, तो उसमें टाइम लगता है। बट It's okay. हाँ, I get it. So Finally it's worthy, right? finally, yeah. He is Jaydeep and he got placed in Intel recently. Hi, he is Rahul and recently he's also got placed in Intel. So I just want to know something from Rahul. Rahul, would you please tell me what are the interview questions that were asked in the interview? They mainly ask about SGA, Verilog, and how to reduce power. Power reduction techniques and all. Okay. So is it interesting that you are working? Yes, it is quite interesting and very challenging. Challenging, right? Okay. So he is Rahul and once again I congratulate you for your success. Hi, he is Paritosh and he is also got placed in Intel and Paritosh, तुम प्लीज बताना तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था, मतलब बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट? Hi all, I'm Paritosh and my branch is Microelectronics Engineering. Right now I'm pursuing low power circuits in microelectronics, and during interviews basically all of the questions were related to microelectronics engineering, mostly electrostatic discharge and how to control power in a circuit. Right now I'm working on sense amplifiers to reduce power usage in memories. So how what is your experience with handling the tools and all, how you feel? Is it tough or is it okay to handle? Because like many other people from this field, they find difficult to handling tools actually. So Yeah, surely. what tool you are using? Yeah, surely without a proper guidance, I think it is quite tough to handle the graphical user interface of these tools. So when I started coming to this lab, so basically Kamal sir helped me out and learning Cadence, which is the best tool for VLSI designing as of now. So all credit goes to Kamal sir. Yeah, no. Thank you. Hi, my name is Shraddha. I'm working on physical design. I started my work from front-end designing. I designed my code on Verilog, then tested it on FPGA. Then I worked on
backend design. I synthesize my design on Synopsys tools, which are Design Vision, and then I inserted DFT using DFT compiler, which is integrated with Design Vision. Then I have done static timing analysis using PrimeTime, which is also Synopsys tool, and then I made layout using IC compiler. There is one more part in physical design, which is verification. I have done DRC and LBS of my layout using IC validator, which is integrated with IC compiler. I also worked on cadence tools like Genius, Innovus, and right now I am working on Vertex. Actually, all these are very difficult in starting, but as we have support from Synopsys and Cadence, and some support from user manuals, and I have my colleague Mr. Kamal, who is very supportive to me, and that's how. But it takes very much time, very much dedication, and if you work on it, you will find interest in it. So this is my team VLSI Fab. So they are working on different areas. So if you have any queries regarding future opportunities or what are the scopes in physical design, you can really follow us. And you can please subscribe if you find this information valuable for you. Please like, share and subscribe. Thank you.